create it. These all questions are created by me only. So try to create more questions. It will help you to push your mind towards these questions and many topics to explore. Next one. So first one, मेरा एक Yes, सेंटेंस है, sir. कोशिश करें उसको ट्रांसलेट करने की. आज तो फ्राइडे है, आज तो आप Hmm. ज्यादा सोए होगे. कैसे बोलेंगे? आज तो आप ज्यादा सोए होगे, आज तो आपका फ्राइडे है यानी आपका डे ऑफ है. कैसे बोलेंगे? Hmm. Okay, so now is today is Friday, so you would have been slept more. You would have slept in. स्लीप You would और have इन, slept. स्लीप और इन को जब साथ में कंबाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है ज्यादा सोना. ठीक है, यू मस्ट हैव स्लेप्ट इन. आज तो आप ज्यादा सोए होगे. Hmm. ठीक है, होगे. हाँ That is होगे. why I अब सो use चुके हो been. आप, सो चुके हो आप. हम गेस कर रहे हैं, वो Hmm. पास्ट में Hmm. चला गया. Hmm. आज तो आप ज्यादा सोए होगे ना. सो यू Yeah. मस्ट हैव स्लेप्ट या मस्ट हैव स्लेप्ट इन. आज तो आप Hmm. लेट उठे होगे. हाउ टू? Today, today you would have. Today you have woke up late. So, today you must have woken up late. Today you must have woken up late. Would have बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा. लेकिन हमारे बोलने के Hmm. तरीके से ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है ना, आज तो आप जरूर लेट में उठे होगे, है ना. तो जरूर हमारा क्या है, Hmm. वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे फील में आ रहा है. You must have woken Yeah, up late today. Okay. but if I 90%, I think sure, so I can use must. But I देखिए, ये आपको सिखाने के लिए I'm मैंने sorry, 90% और 50% आपको सिखाने के लिए बताया हुआ था. ठीक है, उस टाइम आप but अलग लेवल पे थे. I'm not sure. I'm not sure to 90%. I'm just 80%. So I use because yeah, I would have. आपको फील करके बोलना है. ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है 50% 90%. वो लर्निंग पीरियड में मैंने आपको बताया था. अब हम लोगों को गेस करना है कि क्या बोलना चाहिए. हे टुडे यू मस्ट हैव स्लेप्ट वेल. आज आप तो बहुत अच्छे Mm, से सोए होगे, बिकॉज इट्स योर डे ऑफ mm, टुडे. तो मस्ट हैव जा रहा है ना, mm, जरूर आप ऐसा कर रहे हो. कि जरूर होना हमारे सेंटेंस में बिल्कुल जरूरी नहीं है, फील से हम श्योर करते हैं. ओके, सो अभी mm, हम बोल रहे हैं, अब तो उसने चलना भी स्टार्ट कर दिया होगा. mm. छोटा बच्चा है कोई, हम काफी Uh, टाइम बाद उससे मिलने जा रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं, तो वो चलने भी लगा होगा, चलना भी स्टार्ट कर दिया. yeah, he must have. He must have. Uh, he must have started walking till now. मस्ट हैव स्टार्टेड वॉकिंग. ये मस्ट हैव स्टार्टेड वॉकिंग. तो मस्ट हैव डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा श्योर है ना. अगर कम श्योर है, कभी कभी हम सेम सेंटेंस बोल रहे होते हैं थोड़ी कम श्योरिटी के साथ, तो अब उसने चलना शुरू कर दिया होगा ना. थोड़ा गेस Yeah, कर रहे हैं, है ना. I'm talking about this situation because I know when I met the baby, that time he was a year, but now second year is going on, so definitely he must It's have running. started walking. It's running his second year. He Yeah. must have completed his Yeah. 1 year. Hmm. Now he must be running in his second year. Must be Hmm. running, है ना. अब चल रहा होगा, अब प्रेजेंट टाइम में. ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि माई 22 इज रनिंग, माई 27 इज रनिंग, तो मतलब कि ये चल Hmm. रहा है. आई हैव कंप्लीटेड 26, माई 27 इज रनिंग. तो इस तरह से बच्चों का कहेंगे 2 इज रनिंग. ठीक है. Hmm. ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था क्या? उषा, आर यू रेडी फॉर Yes, द क्वेश्चन? yes, ma'am. What is that work for which you are mostly appreciated? What is that Mo- quality of yours? Most of the time, I get appreciated because of my enthusiasm and the spirit to learn new things. Okay, My that's family, my family loves, my family loves this quality of mine, and my friends also appreciate my this quality. And because of these qualities, I get supported very well by my family and friends. hmm. Okay. Next. So, what about your physical appearance? Like, have you got any kind of compliment for your physical appearance? Anything No, which you? no. I'm not talking about physical No, appearance. no, no. Uh, Additional question. yes, Now, yes, this is the second question for you. yes. Second question. Okay.
Moreover, I get compliments for my physical appearance also, because I am fit and fine and good looking. No, no, this is a negative way, No, I'm not but talking about compliment, negative. I never but talk about compliment, negative yeah, things. but Hmm. compliment is compliment, na. Compliment. No, no, no. Uh, Compliment is something positive. It is not negative one. That is comment. हाँ so, मतलब जब आपको कोई criticize करता है, that uh, is negative one. yeah, So, any criticism have you received from anywhere, Usha? Let me know. Yes, ma'am. A lot Yeah. of time. Which kind of? So many kinds. Sometimes when we argue on any topic, then if there is any um, disagreement, then we have to face criticism. And if we succeed to remove the disagreement by Neha. arguing well, then it is the result is good, but sometimes the result is bad also. Criticism is the part of life, part of our argument, so it is always welcomed by me. Okay. Really? Does it really make you feel less? Pardon, please. Does it really make you feel less? Like when someone criticizes about you, do you feel less? Do you feel like humiliated or something? uh, for the first 2 3 seconds I feel uh, less, but as I think twice on that point, the criticism is here criticism is not to destroy you, it is to build up you. So Hmm. I take positively that thing and rethink and reconsider. Then I try to uh, work ahead with that criticism taking as a positive compliment. Okay. So I also believe never talk about negative things, even if you are aware. Publicly, especially publicly, don't admit anything. If you have done anything, don't admit publicly. Try to work on your negative point if you have done. Yes. No Yes. problem. It's about physical appearance. If we talk, I think nobody is perfect. Do you think No. everyone is Yes. perfect? We Yes. all are having uh, some disquality, yeah. some qualities, physically or internally as well. So if we how admit and we start working on that, that is the best part. If we have, no problem. Yes, what is your physical appearance is in not in your hands, it is God's grace, Yeah. and you are not responsible for those things. Mhm. You are blamed for those things only for which you are responsible. Physical appearance is in not your hands, but you can maintain a little that. But if someone is criticizing you for your physical appearance, then they are fool. Right. And that It is, maybe he must be perfect. Maybe he's perfect. That's why no he one is thinks he's perfect. Even perfect. God is not perfect. Yes. The Oh, definition of beauty is varies to person to person. Yes. So the next one question, Kalish and Sohail, for you, do you think criticism is really important in our life and it help us to improve? Why? How? And now Sohail. Ma'am, I ma'am, think may I ask a question? Ask a question, Yeah, please. ma'am. How to say this in English? मुझे बुरा लगता है. I feel bad. I feel bad, मैं दिल पर and ले I लेती feel हूँ. I take it to my heart. जैसे I take it to my mind आपने बोला कलिश जी. So I take it to my heart. हम दिल पर लेते हैं. दिमाग पर आप शायद boys लेते होंगे. okay. Maybe. And feel down. I feel down, I or feel I down. feel less, or I Humiliated. feel low. Which is Humiliated correct, है ना, बड़ा मतलब नीचा सा फील होता है, ऐसे कोई हमें humiliate कर देता है, नीचा दिखा देता है. ma'am? Which word is correct? Feel down, feel less, feel low. तीनों सही है. इंग्लिश का Oh, यही yeah, बेनिफिट है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. yeah, you can use like that. I feel blue. Yes, of course. I दुखी feel फील flat. करना. ma'am, what you said for dil par mat lo? Take it to my heart. I always Oh, take it to my heart. है ना, I'm okay. sensitive girl, so I take it to my heart. I used to take it to heart previously, but I don't take now. I have become
50% practical, not 100%, but 50% at least. And we should be, as I believe. Yes, so Sohail, this is the question for you. Like, how do you Uh, handle criticism in your life? Actually, actually, I'm introvert person, so very rare chances to criticize me from anyone because I am busy with my I keep busy with my work. So with unnecessary talking, it's not my nature. I keep myself busy with my work. I'm always Hmm. engrossed in work. दो तरीके Hmm. से बोल सकते हैं. Sorry, could you please come again? Yeah, I'm always engrossed in my work. I'm always busy with my work. Busy with, engrossed in. I keep myself Yeah, busy with my work. Keep myself. I think always is good for me. I always busy with my work. So very rare chances to criticize me from anyone, and without reason and unnecessary talking, it's not my habit. So, but criticizing is the nature of human. I know very well they don't care about their situation, but they are ready to criticize another person. Everyone has a weak point, but um, instead of updating the weakness point, they are ready to criticize another person. But I think we don't take a heart. We Take don't it, take a take heart. anything to our heart. We shouldn't take anything to our heart Yeah, because criticizing because is the nature of yeah, human. but Are right, maybe to some extent they are right. कुछ हद तक, to some extent, to an extent, एक हद तक वो सही भी हो सकते हैं. They are criticizing about it, so this way we can get a chance to improve in our things. wrong. So after speaking me, you are correct. You are correcting me. So this thing good for me. Yes. अच्छा, जैसे कि आप लोग unnecessarily ing forms लगाते हो, and never mind if I correct you. If I correct you, it Hmm. means you need correction. ठीक है. अब जैसे you are correcting, इस जगह ing की जरूरत नहीं थी, बोल दिया, बहुत गलत नहीं Hmm. है, लेकिन you correct. आप मुझे करेक्ट करते हो Hmm. जब मैं मिस्टेक करता हूँ. हमारा सेंटेंस ये था ना. तो आप मुझे करेक्ट कर रहे हो, ये तो अब करंट में चला गया ना. एक्चुअली आप मुझे अभी करेक्ट कर एक्चुअली रहे हो. एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि इसमें रहा रही या ये लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि आप करती हैं यस. वो जो छोटी सी बिंदी है ना वो हमको मजबूर करती है आईएनजी लगाने पे एक ये कंटिन्यू सिचुएशन है जो हमारी हिंदी और इंग्लिश इसे के बीच का गैप है ना, हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वो हम्म गैप मुझे हटाना है पूरी तरह से. हाँ डायरेक्टली इंग्लिश में आ- सोचकर इंग्लिश में बोले, और वो भी करेक्ट बोले, करेक्ट सिचुएशन पर बोले. वो हमें करना है. तो इसलिए मैं उसको वहां पे ऐड करता हूँ अगर आप यस. बोलते हो वो मुझे करती है तो चल गया सीधा सीधा हमें जरूरत नहीं है करती हैं वो छोटी सी बिंदी मजबूर कर दिया हमको आईएनजी लगाने पे क्योंकि कंटिन्यू सिचुएशन है अभी नहीं वो नहीं, चल रही है खत्म नहीं हुई अगर अगर है तो भी नहीं लगेगा. रिस्पेक्टेड है, शी करेक्ट, एंड ये भी सही है. हम्म ऑलवेज यू करेक्ट. हम्म अच्छा, अब यहाँ पर हम इंटरचेंजेबली सेंटेंस यूज करते हैं, और ज्यादा अच्छा लगता है. ऑलवेज यू करेक्ट व्हेन आई मेक मिस्टेक, है ना. व्हेन आई एम हम्म मेकिंग मिस्टेक यू आर करेक्टिंग, ये थोड़ा गलत भी हो गया, ऑलमोस्ट गड़बड़ लग रहा है ना. सो हम्म you always correct when I make mistake, when we make mistake. That thing really I want to improve. सेंटेंस को उठाना कहाँ से, किस तरह हैंडल करना है, कौन सी बात को किस तरह कहना है, जैसे अभी मैंने यूज किया. टू एन एक्सटेंट दे आर राइट. जो हमारे हम्म क्रिटिसाइजर हैं, तो अगर हम क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर लेते हम्म हैं, देखो फील कर लेते, वो अलग थी, अलग चीज है. दिस इज अदर थिंग. इफ वी स्टार्ट फीलिंग, वी स्टार्ट टेकिंग टू आवर हार्ट, एंड वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक humiliation or this or that, it is other thing. But if we take it हम्म seriously, then we can learn a lot. हो सकता है कुछ हद तक वो लोग सही भी हों. इट मे, टू एन एक्सटेंट या टू सम एक्सटेंट दे आर राइट. एक्सटेंट क्या yeah होता है? एक्सटेंट क्या to an होता a है? कुछ great हद तक. extent and great extent last time you told us हाँ, तो ग्रेड कर देंगे तो काफी हद तक आप सही हो. कोई बात आपके मन में, हाँ काफी काफी हद तक आप सही हो. टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर राइट. काफी हद तक आपकी हम्म बात सही है. ओके. तो बस इसी तरह से हम चीजों को समझेंगे कहाँ क्या बोलना है. तो अभी नाउ द हम्म नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज दैट एक्टिविटी इन योर होल डे व्हिच यू डू एंड यू फील लाइक it is waste of time, but I'm not able to overcome it. How to? okay so my first question here हाँ I would like प्लीज. to ask one question
So you guys, tell me, according to you, which is the greatest invention in the world? Please, would you mind Which repeating? is the Which is the greatest invention in the world? When early men started controlling the fire, then the life get got changed, and because of that we had so many changes. And the second thing, which was the um, neev ka pathar, which was the basic thing, was industrial revolution in Okay. 1800. Because of those things the civilization uh, has seen a lot of changes. So in And you, what way? Mr. Khalid? In what way, Usha? In what way, like a person can control the fire? In what way? I want to know. Explain In it the a bit. beginning, when men uh, s- uh, started getting fire by rubbing two stones. Okay. Early man, you are talking about early time. Yeah, of course. Yes, the early men started getting fire by rubbing two stones. When they had fire, then they tried to control that fire. That was the beginning, and because of that fire they started eating cooked food, Hmm. roasted food. Hmm. That was the first time when men started learning and learning and learning, and living and living in some pattern, and thinking about things. That was the first thing from the That was the first. civilization started. That was the first step towards learning. That was the Yes. first step towards learning, and after that, they kept stepping up their effort. After that, they kept stepping up their effort, और उसके बाद वो अपने प्रयास को बढ़ाते गए. Stepping up their efforts. Okay. Then they kept stepping up. Is it correct? Yeah, They stepping up kept their efforts. stepping up. Okay. Okay. Yes, of course, we need practice. And you know, one thing more. We cannot expect ourselves in one time to be correct in all things. Like our mind is busy thinking about the things now. What about you are trying to answer? अब देखो what about you are answering भी बोल सकते हैं ना. Answering अच्छा नहीं sound करेगा मेरे mind ने कहा what about you are going to answer. बस ये चीजें आप लोगों के अंदर ऐड करनी है कि इंस्टेंट मोमेंट पर आपके अंदर एक सेंसर एक्टिवेट होता है, वो आपको तुरंत इंडिकेशंस देते जाता है, ये अच्छा नहीं लगेगा इसके पहले ये लगा दो. बस वहां तक रीच करना है. व्हाट अबाउट यू आर गोइंग टू आंसर, व्हाट अबाउट यू आर आंसरिंग. ऑड लगा ना थोड़ा सा. तो यू आर ऑर्डरिंग बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. यू आर ऑर्डरिंग बट यू आर गोइंग टू ऑर्डर. एक्चुअली आई एम ऑर्डरिंग समथिंग, नो आई एम गोइंग टू ऑर्डर समथिंग, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स. तो हम इस तरह से बोलते हैं, वो हमारा सेंसर एक्टिवेट कर रहे हैं हम यहाँ पर. अदरवाइज हम लर्निंग भी करते रहेंगे. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. कुछ अगर हमें लगता है तो हम कुछ लर्निंग भी करेंगे. लाइक सपोज टू हमने पढ़ा है, सीम्स हमने पढ़ा है, लेकिन हम उसको एक्टिवली नहीं यूज कर रहे हैं. मैं नोटिस कर रही हूँ. और अपीयर के बारे में पढ़ा था. आई अपीयर यू आर डिस्टर्ब. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. या लेकिन हमने सीम्स अपीयर्ड को में यूज वो करते नहीं देखा आप लोगों को कभी. सीधा सेकंड फॉर्म करेंगे अपीयर्ड में. या ऑफ कोर्स अपीयर्ड. वैसे हम सीम की बात अभी कर रहे हैं. तो सीम का क्या है कि जब आप कोई चीज देख करके गेस कर रहे हो तो हम सीम का यूज करते हैं. मुझे तो वो बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है. तो लग रहा है ही सीम, लग रहा है तो भी हम सीम बोलेंगे, सीमिंग नहीं बोलेंगे. ही सीम्स या फिर ही सीम्स टू बी इरिटेटिंग या इट सीम्स टू मी ही इज इरिटेटिंग. हमारा ओल्ड वाला तरीका क्या था जब हम 10th 9th में हुआ करते थे, इट सीम्स टू मी ही इज इरिटेटिंग. ये हमारा ओल्ड तरीका है. ठीक है. नया तरीका है ही सीम्स टू बी. ही है ना तो सीम्स जाएगा. ही सीम्स टू बी इरिटेटिंग टू मी, है ना. मुझे लगा कि वो कुछ छिपा रहा था, सो he seemed to be hiding something. नया तरीका. It seemed to me he was hiding something. ये पुराना तरीका. अगर आपको फ्लो आ रहा है पुराने वाले तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोल सकते हैं. बट यहाँ पर रिकमेंडेशन जाएगी ये कि आपको नया तरीका अप्लाई करना है. ठीक है. कि he seemed to be hiding something. नहीं, नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि बैलगाड़ी छोड़ के तो ट्रेन पकड़ना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए. और अगर टफ नहीं लग रहा है तो इसको अपडेट करना पड़ेगा खुद. यस. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं दिया. व्हाट आई Ma'am, आस्क्ड, लाइक repeat the व्हाट इज question.
Then please Yes. repeat the question. Yeah, please. Okay. So my question was, what is that activity which you do, which you add in your daily routine, and you feel like I shouldn't because it is wasting my time? Sometimes we are not able to control ourselves. Now we do something, we try to overcome that habit, that activity, that tendency, but we are not able. So what is that one activity which you don't want to add in your daily routine, but you add? Scrolling the mobile, watching the Oh reels my god. is really wasting I have more time. overcome, but I have overcome. I never scroll. Whenever I Yeah, try to scroll, अब देखिए जब मैं स्क्रॉल कर रही हूँ कभी कभी मैं स्क्रॉल whenever I scroll है ना आई एम स्क्रॉलिंग नहीं बोला मैंने whenever I scroll so I feel like it's a waste of time and I just yeah. leave it. Hmm. Using the mobile like Facebook, YouTube, and social medias, right? So we can use it. I can be used for the other learning purpose as well. Many times during before the bed, so I start seeing any of the social media messages. No, it's taking more time, so it's really waste of my time. I realized after couple of after not couple of half an hour or 15 minutes later only I realized why I'm wasting the time to check those messages. It's not necessary to watch that. So I feel then I cut them off. Then I go for sleep. So it's my habit of using this social media before uh, going to the bed, or 15 minutes or half an hour it's take time Set any to. certain limitation for this. Set any certain limitation Yeah, for this, like but 10 minutes, I think it's 15 not minutes. necessary before the bed, so our mind will change. So that's why it's not. I believe it's not necessary to wasting the time. That yeah. Okay. Yes, Usha, what about you? Uh, I think that whenever I go to learn anything online, like if I'm searching for a recipe on YouTube, then I have to scroll a lot of videos, and I have to find that particular one video which I wanted. Uh, for that, I have to scroll a lot. I have to go through a lot of videos. That is wastage of time. And I think there should be one any key by that we can get what information is needed directly. Hmm. uh, There it are makes many you. apps actually, they will get you meaningful videos. You don't have Yes, to yes. scroll a lot, but they If are paid. for that, yes, nowadays for that AI is available. If I have a capability of uh, writing correct prompt, then AI will answer me in correct way, in short time and suitable answer.